Okay, thank you very much for this opportunity. I would like to make this session very interactive. So let's all gear up for some interaction. In addition to that, I would also want to know, let's start with, how many of you are with the background of computer science? Let's have a show of hands. How many of you have background with computer science? And how many of you are with the background of cybersecurity? Cybersecurity? Just 2 people? Okay, cool. Okay, let's just kickstart things with CERT. What do you think is CERT? Has anyone heard? Has anyone heard about the term CERT before? CERT क्या होता है? Anyone? CERT is the Cyber Emergency Response Team, and very recently, Pakistan has established its first ever National Cyber Emergency Response Team. I'm the Director of Capacity Building over there, and I'll be talking more about National CERT in the later half of the presentation, but I just wanted to give you a brief overview, right? So let's just kickstart things with the main crux of my talk, which is the weakest link. So if I talk about the levels of exploitation, to me, there are primarily 2 levels of exploitation. There is this organizational and individual. So if you have exploitation, I hope everyone is okay with bilingual communication, right? Okay. So organizational level pe exploitation hoti hai, and then there's this exploitation at individual level, right? But even if you go and look into the organizational exploitation, most of the exploitation is triggered from the human factor. Human is the very, very important aspect when it comes to exploitation. देखो यहाँ पे जो आपकी businesses vulnerability occur होती है, most of them are driven by the human aspect, right? So the most important thing here is that human is the weakest link, right? Bruce Schneider is a very popular mentor and guru of cybersecurity. He says that amateurs hack into systems, professional hack into humans. Human को hack करने को क्या कहता है? किसी को idea? Social engineering. Social engineering is the art to hack into humans, right? And this is the threat landscape. Humans are the low-hanging fruit because remember that humans are the biggest asset when it comes to any organization, but at the same point of time, they're the weakest link in an organizational security structure, right? And there are so many aspects which can actually compromise a human. So let's just, आपको पता ना जैसे अगर हम security की बात करते हैं तो vulnerabilities होती हैं system के अंदर. तो अगर हम लोग एक laptop की बात करें, what could be the different levels of vulnerability that exist in a system? Anyone? एक system पे किस level पे vulnerability हो सकती है? Operating system level पे हो सकती है, application level पे हो सकती है, hardware level पे हो सकती है, right? इसी तरह humans के अंदर भी vulnerabilities होती हैं. किसी को idea है? Anyone who would like to name some vulnerabilities in humans? Okay, great. Or? Rage. Huh? Rage. Okay, great. Anyone else? Greed. Brilliant. ये सारी वो vulnerabilities हैं जो humans के अंदर exist करती हैं, right? And I believe if we look deep down inside us, we see a lot of these exist into us as well, right? And all of these vulnerabilities can easily be compromised, very, very easily compromised. As a matter of fact, जब हम cyber security की बात करते हैं, the only attack vector that has a 100% success rate is social engineering. 100% success rate. So if you do the research well and you know the person and you have done the reconnaissance part well, you can easily breach into the system. Let's look at the dilemma कि problem कहाँ पे exist करती है. So this is the cyber security circle. मैं अमूमन ये बहुत पुराने अरसे से ये बात कर रहा हूँ, and it's still very relevant. एक तरफ functionality है, एक तरफ ease of use है और एक तरफ security है. बीच में एक ball है, right? This ball generally for us is somewhere between functionality and ease of use and furthest from security. हमारे लिए security इतना कोई concern नहीं होता. A ball is probably lying somewhere between functionality and ease of use, because the more you move the ball towards security, the further it's going to move away from functionality and ease of use. ये बात समझ आइए किसी को? एक example लेते हैं. अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, which is the most vulnerable operating system?
माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज। आप सब लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? आई रेस्ट माई केस। व्हाई? कारी लिनक्स को डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो? वो जब प्रोजेक्ट करना हो, कोई पेन टेस्टिंग असाइनमेंट हो, कोई रिकॉन करना हो, तो काली हम बूट अप कर लेते हैं, वीएम बना के रखी होती साइड पर। डे टू डे बेसिस पे जिस पे यूट्यूबिंग करते हो, जिस पे अपने गूगल करते हो, जिस पे नेटफ्लिक्स देखते हो, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये जानते हुए सारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं कि सबसे वल्नरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? अब ये बात समझ आई है सबको? सो दिस इज द डिलेमा। वी आर still inclined towards more functionality and ease of use rather than security, and that's why most of the people get compromised. So आज की मेरी talk जो है, I'm actually trying to focus and build up upon the different aspects that lead towards human hacking or the weakest link compromisation. तो सबसे पहले जो आपका बहुत important factor है वो है phishing का। ये नाम सुना हुआ है सबने? क्या होता है ये? ओके ओके, फिशिंग होता क्या है जनरली? एनीवन? सॉरी, हाँ हाँ, अच्छा, गुड गुड। इसके मोड्स क्या क्या होते हैं? ऐसा तरीका, it's a by the way it's a crime. It's more of साइबर क्राइम के आप उसमें आए ना कैटेगरी में, तो इट कम्स अंडर स्कैमिंग, स्कैम के क्राइम के अंदर आता है। ये होता क्या है कि आप लूरिंग करते हैं अपने विक्टिम को टू गिव एन इंफॉर्मेशन और टू गिव एन सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउट टू यू थ्रू डिफरेंट मीन्स। इट कुड बी थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस, इट कुड बी थ्रू ईमेल्स, इट कुड बी थ्रू फोन कॉल्स। क्या कभी किसी का इत्तेफाक हुआ है to come across any phishing campaign or any phishing attack? Has anyone ever come across this? Let's have a show of hands. Come on. Show of hands, guys. Okay. I see a lot of people who have come across phishing attacks. So very quickly, अच्छा, by the way, again, I'm sorry. Show of hands जिन लोगों को लगता है कि उनके साथ phishing attack हुआ है कभी ना कभी। I'm more interested in those people जिन्होंने हाथ नहीं उठाया होगा। Attempts का नहीं मतलब, when I say phishing attack का मतलब attempt हुई है। कितने लोग हैं जिनके साथ phishing attempt नहीं हुई? Let's reverse the other way around. आपके साथ कभी नहीं हुआ? You sure? Anyone else? बाकी सबके साथ हुआ? Let me help you out. ऐसे messages कभी नहीं आए तुम्हें? बेनजीर इनकम सपोर्ट, अस्मा के पास बैलेंस खत्म हो गया है, वो कह रही है जी को पाकिस्तान में इनाम लेके लाया हो। एग्जैक्टली, तो लोगों को ना कॉन्शियस होना पड़ता है कि ऐसे मैसेजेस जो हैं ये स्कैम मैसेजेस हैं। But guess what? I come across, I have worked very closely with FIA, जो कि अब National Cyber Crime Investigation Agency बन गया है। People have given away 40 लाख, 50 लाख on these scams. People like you and me, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो गांव देहात के अंदर लोग हैं, उन्होंने तो बेचारों ने अपनी प्रॉपर्टियां सेल करके क्या क्या किया, अस्मा को इजी रोड कराने की जरूरत। But the point here is that these scams are so, is attack vector ka success ratio is so high versus if you want to compromise an operating system vulnerability, a remote procedure call and get into a system, it's much more easier to compromise the human aspect. Abhi aapko human vulnerabilities dikhai thi na, those are so easy to compromise and get into the system, right? So these are different phishing attacks. और होता कैसे है? इस तरीके से होता ये है कि आपके पास spoofing, phishing tags along with something which is known as spoofing. Spoofing क्या होता है? Spoofing ये होता है कि आप, for example, अगर for example डॉक्टर उस्मान को एक ईमेल आती है कैन की तरफ से, स्मिथ की तरफ से, तो probably he's going to be a little precautious कि यार ये कैन स्मिथ मैं इसको नहीं जानता। But guess अगर वो खुरम की तरफ से ईमेल आ रही है and we're friends, what are the chances that he's going to open up that email? Higher, right? But imagine कि अगर मैं और research करूँ
और मुझे पता चल जाए कि उस्मान जो है वो वर्क कर रहे हैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जिसके अंदर कुछ लैपटॉप्स हमने प्रोक्योर करने हैं, और मैं वेंडर की तरफ से ईमेल स्पूफ करके एक पीडीएफ भेजूं कि ये कोटेशंस हैं, उस इनवॉइस है, तो क्या चांसेस हैं कि वो खोलेंगे? 200%, राइट? And that PDF could be malware embedded and that could trigger an attack and that could get compromised. इसके बारे में मैं अभी आगे बात करूँगा जब हम APTs की बात करते हैं. But ये आपका एक पूरा threat landscape vector है. So just opening that email up or just sort of clicking on that could make or end up in compromisation. And these are different ways. Emails with malicious links, emails with asking for confidential data, email asking for bank. But spoofing is very, very important. Just remember this part. अभी थोड़ा आगे इसके ऊपर बात करता हूँ मैं. ये एक टिपिकल अटैक वेक्टर है, इसको आप खुद देख सकते हो. इसको एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये वही है जो भी मैंने डॉक्टर उस्मान के साथ आपको पूरा एक अटैक वेक्टर से एक्सप्लेन किया. सो द सक्सेस रेशियो इज जस्ट मल्टीप्लाइड बाय मल्टीफोल्ड्स वंस यू हैव spoofed emails. Spoofed emails ये होता है कि आपको पता चलता है कि this is something. So for example, me and Dr. Amir are very good friends. तो जब अगर उनकी तरफ से मुझे email आएगी, I'm just going to blindly open up. Trust. अभी आपको थोड़ी देर में बताया था ना, trust is also a very important human vulnerability which gets compromised all the time, right? So spoofing attacks में किस तरह के attacks होते हैं? दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना? But guess what? The URLs are going to be different. एक टेक्निक होती है, उसका नाम होता है URL obfuscation. सुना है इसके बारे में? URL obfuscation. Obfuscation क्या होती है कि वो आपके Instagram जैसा दिखता या ठीक है, अमूमन इस तरह होता नहीं है. अगर आप अपने ब्राउजर के ऊपर खुद से जाके if you open up Instagram.com because you're opening up Instagram.com, right? But if you open Instagram.com from an email link, from a WhatsApp message, तो उसमें आपके पास वेबसाइट ऐसी ही होगी जो बिल्कुल दिखने में Instagram जैसी है, but guess what? The credentials that are going to be inputted here are going to be harvested by the attacker and are going to be misused or misdirected, and things could happen like that. इसके बहुत सिंपलिस्टिक तरीके भी हैं और कुछ एडवांस तरीके भी. मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ. ये आपको नजर आ रहा होगा फेसबुक और ये फेसबुक, इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है दोनों में? स्पेलिंग का छोटा सा मिस्टेक है, राइट? तो दिस इज लाइक वेरी सिंपल, something which is easily identifiable. You can simply relate to that, just look into it, be a little more conscious. इसको कहते हैं look-alike attack, ठीक है? और ये बड़ा सिंपल होता है. I don't know, आप कंप्यूटर साइंस के लोग हो तो आपको पता है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर उसका सोर्स कोड कॉपी करके उसको दोबारा से वैम्प के ऊपर या किसी अपाचे के ऊपर चढ़ा दो तो आपकी वेबसाइट हो जाए, right? So as long as you just put in those credentials, you can harvest those email addresses and IDs and then reuse them. But इसमें आसानी ये है कि you can actually get to see from the URL that there is something fishy out there. Let me show you something more interesting. इन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नजर आ रहा है? ये दोनों मुख्तलिफ हैं, ठीक है? दिखने में ये दोनों Facebook.com है, but they're actually not Facebook. This one is the original and this one is the fake. यहाँ पे कुछ advanced techniques हैं. I'm happy to know that there are people from the computer science department here, so you can get to relate with these kind of attacks, right? पहला होता है जिसको कहते हैं visual spoofing. This again is very simple, right? So instead of using an O, you can use 0 or something like that. लेकिन वो भी identify हो जाता है. But let's come to something more advanced, like Unicode. Unicode का idea है सबको? क्या होता है Unicode? Sorry, आपकी बात करें. Alphabet का जो सिस्टम होता है वो ASCII, जैसे ASCII कैरेक्टर सेट है ना, वैसे यूनिकोड भी कैरेक्टर सेट है. इसी तरह आपके पास साइरिलिक कैरेक्टर सेट है. तो इन कैरेक्टर सेट्स के अंदर आपके पास कोड्स होते हैं जिसके अगेंस्ट आपके अल्फाबेट्स होते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने apple.com लिखा है ना, तो ये अगर आप लिखोगे ना, तो that will translate into apple.com, and it is as good as apple.com. Doesn't it look like apple.com? It is apple.com. So if it flashes onto your browser, it is apple.com. It's got no spelling mistake, it's got nothing, because ASCII में A जो है वो U something code होता है. So this is actually not the AA, but this is the ASCII counterpart of it. इस टेक्निक के साथ चीजें और मुश्किल हो जाती हैं.
Right? So if you have like something like इसके prevention measures के ऊपर आपके पास बड़े अच्छे advanced किस्म के platforms हैं, URL validation platforms हैं, spoofing detection solutions हैं. So there are things out there. लेकिन just talk about you and me. हमारे पास अपने लैपटॉप के ऊपर जो घर का इस्तेमाल कर रहे हैं, even for workplace, do we have any spoofing detection mechanisms? Do we have any URL validation process? No, we don't. अच्छा, tiny URLs का नाम सुना ना तुम लोगों ने? क्या होता है? शॉर्टर्स होते हैं, राइट? तो शॉर्टर्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? मुझे BBC का एक आर्टिकल बड़ा पसंद आया, उसका बहुत बड़ा सा लिंक था, तो मैंने उसको tiny URL में डाला, URL शॉर्टर में डाला, उससे जो URL जनरेट हुआ मैंने आपको भेज दिया, आप उस पर ट्रस्ट करते हुए खोल देते हो और BBC का आर्टिकल बन जाता है. लेकिन guess what, अगर वो कुछ और हो तो वो कुछ और खुल जाएगा. It could be a fake page, Facebook, Instagram or something more interesting, right? Which I'll show in a while. इसी तरीके से आपके पास ब्राउज़र vulnerabilities होती हैं. अच्छा, यहाँ पे कितने लोग जो हैं वो एंड्रॉयड यूजर्स हैं और कितने लोग एप्पल यूजर्स हैं? शो ऑफ हैंड्स एंड्रॉयड, शो ऑफ हैंड्स एप्पल. हाउ मेनी बिलीव व्हिच वन इज बेटर? ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर फिर किसी दिन 1 घंटे का लेक्चर होगा. एप्पल बेहतर है या एंड्रॉयड बेहतर है? एप्पल. ये किसने कहा? एप्पल ने ही कहा. ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है. एप्पल कहेगा कि एप्पल बेहतर है, पर आप लोग यूजर हो एप्पल के या आप लोग यूजर हो एंड्रॉयड के, डू यू थिंक A is better than B or B is better than A? That's another day, another story, some other day. मैं पर्सनली बिलीव करता हूं पावर lies in control, power lies in customization. Apple doesn't give you that. I personally believe Android, because Android gives you. और अगर आप मेरी जगह पे हो, I don't know, मेरे बैग में शायद पड़ा हो, I have a phone which is completely rooted Android based. ठीक है, उसके ऊपर काली आप चढ़ा दो, उसके ऊपर कुछ भी कर लो, you can actually you break barriers, you establish your own security posture. But if you're not sure about that, don't do it. उसके ऊपर अभी मैंने आगे बात करनी है, so just wait and watch. अच्छा, कितने लोग एप्पल वाले कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल करते हो? ब्राउज़र कौन सा इस्तेमाल करते हो? सफारी इस्तेमाल करते हो ना, ये और एंड्रॉइड वाले कौन सा इस्तेमाल करते हैं? क्रोम. You use Chrome on Apple. That's why you talk around it. You don't use Safari, because Safari is the stock browser. And stock browser comes in with stock vulnerabilities, right? Though I believe that Chrome will be possible vulnerabilities, and you know we have explored that and we've seen that. But a lot of stock browsers have a lot of built-in vulnerabilities, जिनको compromise करके यही attack किया जा सकता है, right? Or ये attack some other day maybe, if I have the opportunity of coming back to UET, I will demonstrate some live demos. We'll do that. We've done something like that before. So maybe some other time, if I get invited, I'll show you live hacking. I'll show you how you get compromised. We can actually do this right here. I'm not prepared for it right now. But these are things. When SSL certificates, हर वेबसाइट के साथ ताला बंद होता है. SSL, blind trust, SSL के बहुत से attack vectors हैं. Starting from SSL replication attacks, SSL stripping attacks, and whatnot. So इन सब चीजों के साथ phishing just goes to another level altogether, right? And then binding it up with some interesting stories. So how would I make someone open a link? Bind it up with some interesting story. Like MS370, सबको याद है? There was this Malaysian plane that just vanished. Everyone was super excited to know कि इस plane के साथ हुआ क्या है? What happened? उस जमाने में अगर आपके पास Facebook पे ऊपर आता है कि Malaysian plane MS370 has been spotted somewhere near Bermuda Triangle, shocking video released. कितने लोग उस पे क्लिक करेंगे? Most of the people. ठीक है? A lot of people. So just bind it up with something which is happening. Bind it up with something people are interested to know. Bind it up with something which is exciting, and you get more audience and you get more victims, right? And then there are something जिसको हम लोग फिशिंग में भी ना कैटेगरीज होती है, जिसमें मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन स्पीयर फिशिंग होती है, वेलिंग होती है, इनकी कैटेगरीज होती हैं. तो स्पीयर फिशिंग होता है कि सिर्फ आपके लिए, जैसे कि आपकी बैंक की तरफ से आप ही को मिला, आपका OTP जो है वो आपको भेजा गया है,
आप OTP हमें शेयर करते हैं, आपके बैंक में कोई इरेगुलर एक्टिविटी हुई है, आप इस लिंक पे फॉरवर्ड क्लिक करके अपने पासवर्ड चेंज कर लें। ऐसा किसी के साथ हुआ? आजकल बैंक वाले स्कैम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, क्या हुआ आपके साथ? आपके साथ हुआ कुछ इस तरह बैंकिंग वाला? अच्छा, I thought maybe you raised up your hand. Anyone who's come across? I come across so many people. They've come across लोगों के बैंकों से पैसे जा रहे हैं. There's so many people who are actually victim of these banking frauds these days. OTP, email compromisation, clicking on links, and then what does that result into? It gives away your password. And as soon as you have a password or OTP for a banking app, you have complete access of their banking financial system. So ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपके पास फिशिंग तो नहीं हो रही है. I would not go into all of them, but just kindly read through. Right? इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि याद रखो लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है. कि अगर आपके बैंक की तरफ से कोई ईमेल आ रही है ना, तो उसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक स्पेसिफिक ग्रामर होती है. अमूमन फिशिंग ईमेल्स के अंदर इतनी स्पेसिफिक या उस लेवल की लैंग्वेजेस नहीं होती. आई डोंट नो यहाँ सब लोगों को पढ़ा भी जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा. एक बात तो हरफ आखिर पत्थर पे लकीर, never click on hyperlinks provided in email. Email में अगर hyperlinks आपके पास है, don't just click on them because they could be compromised, they could be attack vectors, and they can lead to compromisation, right? And things like that. Just go through, right? कहीं पे आपको कह रहे हैं कि आप डोनेट करते हैं वर्दी कॉज के लिए, आप किसी कॉन्टेस्ट में गाड़ी जीत गए हैं, whatever. Just don't fall for that, right?